Okay, so good afternoon. Now, in the last session, we discussed about flexural formula. We derived that formula. Now, this is the formula which we derived, bending equation. Now, I have explained you here what are the terms involved in it, right? What are the terms? Sigma, that is your bending stress, that is either in MPa or Newton per millimeter square, because we will be using in those units. M is the resisting bending moment, Newton millimeter. Okay. I is the area moment of inertia of the cross section of your beam about neutral axis. So the unit will be mm raised to 4. E is the Young's modulus of the material, again MPa. R is the radius of curvature of the beam. So that will be in millimeter, of course. Y is the position of layer, at which position you want to find out the bending stress. And then Z is the section modulus. Now what is the section modulus? Let us understand this. Now we know that if I consider this as a formula, sigma by y is equal to m by I. This is the formula I can do. So what is my bending stress equal to? So my bending stress is equal to m by I into this y, where y is the position where you want to find out. For example, I have a rectangular cross section of a beam. Let's say I have a rectangular cross section like this. Okay. So इसका neutral axis centroid will be like this. So इसका neutral axis ये होगा. So when we know that if it is subjected to sagging bending moment, तो हमें पता है कि इसका sigma compressive strength इतना होगा और tensile stress कुछ इतना होगा, and it will pass through origin here. ये होगा bending stress distribution. We have studied this कि ये maximum value है bending stress का, and so on. So suppose if in the problem they ask you to find out the maximum bending stress, then the y value you are going to take is this value. This is your y maximum, where your bending stress is going to maximum. But sometimes they may ask you a bending stress at a lower section. For example, if they ask you bending stress at the midpoint, bending stress at the midpoint, यहाँ पे अगर पूछा है, तो you will have to take only this much y, and the bending stress value will be see here. This will be lesser value as compared to sigma c maximum. ये वैल्यू मैक्सिमम से कंपेयर करेंगे तो कम होगा. Here how we can find out these values? We can use similar triangle method, because these are all triangular variation. So therefore we can use similar triangle to find out at any layer. So that means on this y value, the sigma value will depend. If sigma is maximum, if I write sigma maximum, so you will have to take y maximum, because rest moment and inertia is going to be same for a particular cross section. So if sigma is maximum, your y will be maximum, right? And so on. So here bending stress depends on this y. Now what if I divide this y maximum to this I? So what is my sigma maximum bending stress? It is equal to m by I. Now this I upon y is also called as z. It is denoted by small z, where this z is known as section modulus. So what is section modulus for any particular section? It is I, inertia of that section about neutral axis, divided by the maximum y. For example, let's say if I go for a rectangular section, okay, if I go for rectangle, now for rectangle it will be like this. Let us say we have taken the rectangle of height h, and or let's say height, instead of height we'll call it as depth d. Okay, we'll call it as depth d. And agar if I draw the neutral axis like this, this is the neutral axis. Now tell me, as it is symmetric, my y maximum y का जो distance होगा neutral axis से, वो होगा मेरा d by 2. Okay, and then if I want to find out section modulus for rectangular cross section, then my section modulus will be I upon y maximum. Okay, now what is I? So I know that कि 1 by 12 क्या होता है? If this is b, ये axis किसको perpendicular d को, तो it will be b into d cube by 12 divided by y maximum is d by 2. So if you simplify, your 1d will be cancelled out, the square बचेगा, and you will get 1 by 6 b d square. So in this way you can find out the section modulus for rectangle. Sometimes they ask you this kind of question also. They'll ask you to find out section modulus for rectangle, section modulus for this one also, for hollow section, and so on. For example, if I go for the
hollow circular pipe. I am not going for the, it's a pipe, hollow pipe, okay, where the outer diameter is, let's say, capital D, and the inner diameter is, let's say, small d. Now in this case you have to find out the section modulus. How will you find out? The section modulus क्या होता है? I upon y maximum, right? Now you know that the centroid तो यहाँ पे होगा, तो axis, neutral axis will be like this. तो neutral axis से जो maximum distance होता है कोई भी एक side का, that we call y maximum. So here in this case y maximum will be capital D by 2, right? तो यहाँ पे अगर मैं substitute करता हूँ तो inertia क्या होगा? As you know, inertia hollow section है, so it has to be like this, pi by 64 capital D raised to 4 minus small d raised to 4, because we will have to बड़े सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का inertia माइनस करना पड़ेगा. As you are doing it for centroids, it's the same way for inertia. Pi by 64 d raised to 4 is the formula, and minus क्यों किया? Because hollow section को minus करना है, and upon y maximum is only d by 2. Now here in this case cancellation नहीं होगा, it will be pi by 32 capital D raised to 4 minus small d raised to 4 upon capital D, and in this way we can find out the section modulus. So section modulus, you no need to remember the formulas for section modulus, but just you have to remember that section modulus is nothing but inertia upon y, because moment of inertia and y, these are the parameters. ये दोनों parameters depend on the geometry of the cross section. They depend on the geometry of the cross section. That is why section modulus we calculate. Sometimes they'll ask you to find out the section modulus, then you can directly use this formula to calculate for a given cross section. It can be a hollow rectangular section, hollow circular section, semicircular, C type, L type, K type, I section, C section column, and so on, symmetric eye, unsymmetric eye, and so on. So we can find out section modulus for any of the cases given in the problem. I hope you understand this particular part. Okay, now let's go to the next part. Okay, so let us go to a particular question now. As you can see, there is a diagram. There is a beam A, B, C, D is a beam which is supported like this. It is supported at A and C. Okay, and D part overhanging है, and there is a 20 kilonewton meter का, there is a couple or a moment acting at the free end, and there is a 45 kilonewton point load acting at B. Okay, now this is and the cross section of the beam is also given. They are asking us to find out, okay, to find out how much will be the maximum bending stress in this particular material. What is the question here is, what is the question? Find maximum bending stress. Bending stress. Now you will say that कि sir maximum bending stress find करना है, तो formula तो हमें पता है, sigma equal to sigma by y equal to m by I, which is the we have derived the equation. तो उसमें से I, y ये सब मुझे निकालना पड़ेंगे. तो I और y निकालने का मतलब ये जो तुम्हारा ये given है rectangle I section given है, for that you have to find out the inertia about x axis. So that is my I. Then y is symmetric है, तो y is easily calculate. Once I know I, and I know, then the next important step is to find out what is m, what is the bending moment. Are you getting it? For example, देखो, how will I solve this? Basically, let me figure out what was my formula. My formula is sigma equal to m by I into y. Out of these three, I need to find out all these three things to calculate sigma. So let us go one by one. Now let us go to calculate inertia. Let us go to calculate inertia. So how will you calculate inertia? So first step is to calculate mi, moment of inertia of cross section about neutral axis. About neutral axis. Okay, how will you solve this? Is this diagram visible to all of you? If it is visible, I am directly writing down, because I know that the centroid is going to be at the center. Okay, so I am trying to write down. We have already understood how to write down the inertia for this one. यहाँ पे we'll have to consider three rectangles, right? So that is why I am not drawing the same thing again. You know that the centroid will be somewhere here, and उसमें से जाने वाला axis ये होगा. Okay, this is 25. Okay, so the very first thing what we are going to do is, let us write down direct relations. Ixx is equal to,
suppose if I talk about the lower flange, now you know the nomenclature also. Lower flange means 200 cross 25. So therefore उसका अगर मैं inertia लिखने की बात करता हूँ तो it is 1/12 into 200 parallel axis 200 है into 25 cube, right, by 12. So that is your inertia about this particular axis, local axis. But I need to shift it. This is the inertia at this axis यहाँ पे. But यहाँ से मुझे इधर पे shift करना है. तो वो distance कितना होगा? तो as you know ये total कितना है? 250 है, right? This is 250. तो ये आधा हो जाएगा 125. ये 125 में इसका half portion मुझे add करना पड़ेगा. तो 125 plus 12.5, how much it will be? 137.5. If you remember the earlier things which you have done, you will be easily writing this. So plus area of the flange is 200 multiplied by 25, and the distance between them is how much? 137.5. Is everybody understanding this, what I am writing? Yes, sir. Yes. So now this entire bracket I'll simply multiply by 2. Why? Because I have two flanges. Two flanges, top and bottom. Plus, now I'll write for web. Now for web it is 1/12. Okay, I need not have to shift it, so directly I will write. For web it is the dimensions is 25 cross 250. So the my axis is perpendicular to 250. So I will write 25 multiplied by 250 cube. Okay. Now, is anybody there? Can you give me the answer? All of you sit with your calculator and give me the answer. The answer is 22.21 into 10 raised to 7. 22.21 into 10 raised to 7. Okay, so this is what the IXX. Are you understanding it? This is why I'm will be giving you only 1 mark for this particular calculation. Nothing much because inertia is the basic part of it. Every time we will require. So you have to simply write down. No need to write down the formulas, everything. I will just require this equation. But do not skip this particular step. Sometimes you may write directly this formula by substituting this everything in calci, but that will not help because examiner has to understand how you have written this particular equation. Okay, otherwise it will be difficult for us to check. Okay, so we have done with the inertia. Now, tell me what will be y. Now you can see here as it is symmetric, there will be equal amount of sigma, equal amount of bending stress on either side. मतलब ऊपर अगर ये मैं type of loading देखता हूँ तो ये y और ये y दोनों same ही रहेगा, right? So y maximum is same on both sides, right ना? So what will be my y value? What will be my y value? Okay. 150. It will be कितना? 300 divided by 2 ना? 150. 150 mm. So y maximum is known to me. Now what is next? What is next is to how to get this particular moment, right ना? Bending stress तो बोला है, लेकिन अभी bending stress अलग-अलग point पे अलग-अलग bending moment आएगा. We have studied SFD BMD. Can you draw the SFD BMD for this particular question? Yes. अच्छा, I will call out some of you to help me out. Yes, who is there? Willingly कोई आएगा? रोहित यादव को छोड़ के. Yes, is there anyone? Yes, sir. Who is this? Saurabh Gupta. Very good. Can you give me how to draw SFD BMD? Because from BMD, if you remember, from BMD I am going to get the maximum bending moment, right? And for which I will have to calculate the bending stress. Because अगर मैं कोई भी point पे bending moment लेके वो कम रहेगा, तो bending moment कम रहेगा तो bending stress कम आएगा. But that will not be the maximum bending stress across the beam. The maximum bending stress across the beam will come at a point where the bending moment is maximum. Understanding it? So yes, tell me now how to do for shear force. And I don't think कि अभी हमें calculation करना पड़ेगा. We can directly draw the SFD BMD looking at the diagram. Or else if you want, you can continue with calculating and give me the values. चलो पहला क्वेश्चन है तो हम लोग डायरेक्ट नहीं करेंगे. Let's calculate it. SFD BMD का भी पार्ट हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे. This is my point C. Point C के लिए dotted lines बना रहा हूँ मैं. And this is for point. Yes.
Yes, Saurabh, tell me. Now, what is the first step we do? Now, what? Shear force about point A, SF1 and SF2. The left side will be 0, SF1. Let me write down something. Maximum bending moment हम लोग calculate कर रहे हैं M, which is the question mark here. So very first thing, do we require support reactions to be solved here? Along A and along C, yes sir. Yes or no? आएगा ना? हाँ sir. Yes, sir. So how we will solve this? How we will solve this support reaction? एक support reaction इधर आएगा, we will call it as let's say RA. Support reaction at हाँ, C. यहाँ पे एक आएगा, we will call it as let's say RC. So RA plus RC equals to 45. and that is one equation. But let me write down one equation by using moment. ना moment लिखेंगे तो डायरेक्ट एक वैल्यू मिलेगा. So let us write down moment about A. 0. कैसे लिखेंगे फिर? RA का तो 0 हो गया, तो ये minus 45 into 2. Minus 45 into 2 plus RC into 4. Minus 20 kilonewton in. Right now equal to 0. So what is your RC? Just a second. 2 plus 27.5. 27.5 kilo Newton. Okay, Newton. RC you got. From RC now can you tell me what is RA? 17.5. Okay, because total ये होना चाहिए बराबर 17.5 kilonewton. Once you know these two values, now can you draw SFD? Yes sir. Directly draw करें. So let us write down A point, B point, C point, D point. A पे देखो दो values होगा, एक तो 0 और दूसरा RA का value 17.5. So we'll go up to 17.5. Yeah, next. From the downward direction में sir 45 B पे there will be another two values. Up to 17.5 से वो नीचे जाएगा 17.5 minus that would be minus 27.5, right? minus 20 RC पे से minus. Yes. बराबर ऐसे आएगा. उसके बाद RC पे वापस से minus 27.5 and then you will get 0 ना? 0 हाँ. और बाद में D पे right कुछ side पे नहीं. कुछ नहीं. तो D पे ये कुछ भी ऐसे नहीं. होगा सिंपली इधर से ऐसे ऊपर फिर नीचे फिर इधर फिर यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 0 ही है कंटिन्यू. 0. Continue. दिस वन हियर ये 0 ही बच गया. ओके चलो तो SFD बन गया. नाउ कैन यू ड्रॉ BMD? Yes sir. But we are interested in more in BMD rather than in SFD. Yes. So I know that bending moment at the end point will be 0 ना. इधर तो 0 आने वाला है. हाँ, जब मैं bending moment B पे find करूँगा तो क्या आएगा? I'm not writing the calculation. अच्छा, if you want I can write down. As you know कि ये हमने already पढ़ा है. Bending moment. Bending moment at point A is 0. Bending moment at point B कितना आएगा? उसके लेफ्ट में एक ही फोर्स है RA, that is 17.5 multiply by how much distance 2. कितना हो जाएगा ये? 35 ना? बराबर कि नहीं? 35 kilonewton meter. हाँ. Next. Bending moment at C कैसे करोगे? सब उसके राइट साइड पे एक राइट साइड वाला फोर्स ले सकते हैं. एक सिंगल फोर्स है राइट साइड पे. राइट साइड पे सिंगल फोर्स नहीं मोमेंट है. सिंगल मोमेंट सर. हाँ, वो -20 लेना पड़ेगा. अगर डायरेक्शन एंड राइट ना? -20 kilonewton meter. और else if you want to यहाँ से लिखना है तो ऐसा लिखना पड़ेगा 17.5 into distance is 4 minus 45 into distance is 2. कितना आएगा देखो ये 70 minus 19 that is -20. -20. तो सेम ही आएगा as the way you want you can write down.
एंड देन लास्ट वाला अगर पॉइंट डी पे देखोगे, बेंडिंग मोमेंट पॉइंट डी पे दो वैल्यूज है, राइट ना, दो वैल्यूज है, एक तो लास्ट वाला वैल्यू 0 आएगा और एक एक माइनस 20 आएगा, -20 आएगा और एक 0 आएगा। 0 ओके सो अच्छा, शैल आई राइट डाउन दैट? नो सर, ठीक है, हम लोग वो चलो लिख देते हैं। बेंडिंग मोमेंट अगर मैं डी पे कोई सेक्शन लेता, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का, वो मोमेंट को छोड़ के अगर मैं कोई सेक्शन लेता तो आंसर क्या क्या आता? वो तीनों चीजें आते हैं यहाँ पे, 17.5 इंटू 17.5 इंटू डिस्टेंस इज 6 माइनस 45 इंटू डिस्टेंस इज 45 into 4 प्लस कितना है वो 27.5 into 2 into 2. So if you solve this, you will get plus 20 as your answer. करो ना, plus 20 आता है कि नहीं? माइनस आएगा ना, नहीं, प्लस या माइनस अभी चेक करो, मैं आई हैव नॉट कैलकुलेटेड। माइनस आएगा सर, -20 आएगा सर। हाँ, -20 आएगा, फिर वो साइड का ऐड करके we will get 0, right? So we will get 0 value first, then 35, positive 35, positive 35, then Then? minus 20, -20, फिर minus 20 then 0. एक मिनट, पहला 0 वैल्यू है, देन बी पॉइंट पे 35, सी पॉइंट पे -20, हाँ, -20 and then -20 and 0. 0. So you will get this is the point, then it will drop it here, it will go it here, and it will come back. This is the point of, if you remember, we were calling it as point of contraflexure, right? Where bending moment 0. So now tell me, what is the maximum bending moment your beam is subjected to, and at what point? At point B. This is 30. maximum, right ना? So therefore मैं maximum bending moment m का वैल्यू कितना लूंगा? ये जो 35 kilonewton. क्या है? It is 35 kilonewton. kilonewton meter. But I will not be using this value in my calculation. I'll have to, if you remember the earlier slide which I had shown you, or I had written that part, कि your moment should always be in what, which unit? Newton. Should be Newton millimeter. You should not write in kilonewton meter. ठीक है, because हमारा बाकी का जो calculation है ये I, Y सब millimeter में, so you have to convert. So that's why किलो का आता है 10⁻³ और मीटर का भी 10⁻³, तो it will be 35 into 10⁻⁶ Newton millimeter. This is an important step, as many of the students they fail to convert here and their answers will be absurd here. Because our other calculations are in millimeter, you cannot have your moment in kilonewton meter, which will give you a wrong answer. So you have to convert this. This is important step. Okay, so moment I know. Now can you calculate the maximum bending stress? Now I am not writing it is compressive or tensile. I'll come back to that point. First of all, let us calculate. So maximum bending moment is M maximum upon I about x-axis or the neutral axis into Y maximum. Okay. Now we have all the values. What are the values? M का value कितना है? 35 to 10⁻⁶ into what is the Y का value? 150 divided by what is I 22.21 into 10⁻⁷. Now give me the answer. 23.638. 23.638. 638. So this is my MPa. Now this bending stress is either positive and negative both. Do you understand why I am writing positive and negative both? Yes or no? Because I know that. अभी ये मुझे बताओ, ये जो 35 bending moment है, 35 bending moment है, वो hogging bending moment है कि sagging है? मतलब बीम तुम्हारा ऐसा बेंड होने वाला है कि उल्टा बेंड होने वाला है? Sagging. It is sagging bending moment. So tell me, upper fiber will be in compression or tension? Upper flange compression. of the upper flange will be in compression and the lower flange will be in tension. Upper flange पे maximum stress आएगा 23 positive if I assume compression positive, and lower flange पे आएगा 23 negative, that is 23 tensile. Understanding it?
Yes, sir. Yes. Have you understood? Any doubt? Now, in the same question, if they ask you an additional question like this, यहाँ पे यही question में sometimes they add some question. Additional question. What is that? Find. Sorry. Find bending stress at lower face of the upper flange. Yes. Can you find out? Is there anyone who can help me out in this? Find the bending stress at lower flange. Lower face of the upper flange. Lower face of the upper flange. What do you mean by it? Yes, anyone? Sir, we are talking about the bending stress at the lower face of the upper flange. That means 25 So y mm कम below हो the जाएगा. y max will not be there. रोल नंबर B23 वीडियो बंद कर रहे बेटा. या So y maximum 125 ले लेंगे. y maximum कितना लेंगे? 125 लेंगे. Very good. 5. You can do that way, or somebody may go for similar triangle method. If you remember, मैंने बताया था तुम्हें कि bending stress distribution अगर मैंने बनाया तो वो ऐसे बनेगा, बराबर कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये अपर फ्लांज का ये वैल्यू है. मुझे कितने डिस्टेंस पे चाहिए? ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस है. ये कितना डिस्टेंस है? 150. मुझे लोअर फ्लांज मतलब इधर चाहिए कितने डिस्टेंस पे? 125 पे. ये मैक्सिमम वैल्यू कितना है तुम्हारा? 23.683 MPa. तो यहाँ पे कितना आएगा लोअर फ्लांज पे? सिग्मा फॉर फ्लांज, सिग्मा एफ. तो कैन आई राइट डाउन सिग्मा मैक्सिमम अपॉन मैक्सिमम y which is 150 is equal to sigma for flange upon 125. ये भी चलेगा ना? और एल्स अगर ऐसा नहीं करना है, ठीक है, उससे हमें वैल्यू मिलेगा. और एल्स व्हाट यू टू डू in this particular formula, instead of y maximum you will put whatever the required value of y as 125. will give the same answer, right? कितना आता है आंसर फिर बताओ? It will be 125 by 150 multiply by 60 60 नहीं 23.683. 19.73. कितना? 19.73. 19.73 MPa. Got it? Has everybody understood this? Yes, sir. Yeah. So in this way we can solve. Now you will come to know that the concepts which you have learned earlier to this chapters are equally important over here, right? Because the bending moment was not given. You have to find out where to locate the point also. कि कौन से point पे वो भी नहीं पता है हमें. Okay. So we have to draw SFBBMD, you get the maximum value, convert it to Newton millimeter, then calculate inertia, then calculate y and calculate your maximum stress. Sometimes they may ask you some additional question like this, which was asked here at the lower face. What is the stress? Okay. Fine. Now let's go to the next one. Yes. So now they are asking us to find out bending stress at 2 points which are located on the beam. At 2 points which are located on the beam, find bending stress. Sir, I have a question. Yes, go ahead. Sir, in the previous sum, like we found for the lower face of the upper flange. So if we will do that for the upper face of the downward flange, then what? Then the answer will come in minus. Negative sign will be there. Negative sign का meaning क्या है? Tensile. बस फिर समझ गया तू. Okay. चलो. So now the question is, there's a beam. Now here the bending moment is given. They are not expecting us to calculate. The bending moment is how much?
How much is the bending moment? 20 kilonewton meter. But do we require this value? No, we require it in millimeter, Newton millimeter. So I will write down 20 into 10 raised to 6 Newton millimeter. Okay. So we have converted. Now, what else I require? The moment of inertia and the y maximum value. Okay. तो कैसे find करेंगे अभी? To find out sigma, now see here, let us find out first inertia, moment of inertia. Now moment of inertia about x-axis axis, this is my x-axis or the neutral axis, which is shown here. Now tell me what will be the inertia. How will you find out? Do I require to change it? तो यहाँ पे कोई changes की जरूरत नहीं है. Only bigger rectangle minus smaller rectangle का inertia करना पड़ेगा. Let us when I write for bigger rectangle 1/12, bigger rectangle का size कितना है? It is 200 cross 100, बराबर ना? But it is 100 को perpendicular, 200 को perpendicular, so it is 100 into 200 cube. Did you understand this? How I am writing? Minus क्या करना है? Lower rectangle. So 1/12 into उसका कितना lower का है? 160 cross 60 ना? So it is 60 multiplied by 160 cube. Okay. So give me the answer in millimeter raised to 4. Yes. $46.186 into 10 raised to 6. 46.186 मतलब 19 लिख दो into 10 raised to 6 millimeter raised to 4. So this is what the inertia which we get. Now they are asking you to find out stresses at 2 points, sigma A and sigma B. Now you can see for point A, what will be the y for point A? What is the maximum value of y for point A? So point A का location क्या है? Neutral axis से कितने distance पे? So you can calculate it is at 100 mm, right ना? So if you know y, can I calculate sigma A is equal to the moment upon the inertia into y for point A. So what is the moment value? Is given 20 into 10 raised to 6. What is y value? 100. What is I inertia? 46.19 into 10 raised to 6. So you can cancel out this 10 raised to 6. What you will get the answer in MPa. And similarly for B, give me the answer. 43.29. 43.29. 43.29. Very good. 29. Yes. Now, what about point B? What is the value for YB for point B? 80. Let's check 80. that. Okay. So now, what is Y for B? Or value of Y for point B? 80. Is Y 80 mm. 80 mm. Okay. So अगर वो 80 mm है, तो what will be sigma for B? It is 34. M by I into Y for B. 34.64. So you'll write down, 1 minute, 2 into 10 raised to 6 multiply by 80 divided by 46.19 into 10 raised to 6. Again, this is cancelled. What is this answer? 34.64. 34.64. 34.64. 34.64 MPa. Done? So is my answer correct? Is there anything missing here? Negative sign. The negative sign. Positive and negative sign or the nature of the stress. I have not specified whether it is compressive or tensile, right? Now, can you tell me which is compressive, which is tensile? How you come to know? Compressive B tensile. How you came to know that B is compressive and A is tensile? Can it be vice versa? No, sir, from the sign, we are rotating it. So you can see there the bending moment has got some direction. वहाँ पे देखो bending moment का direction upward, beam को upward bend कर रहा है. तो beam को अगर upward bend करेगा तो ऊपर का layer compression में जाएगा, नीचे का tension. So therefore A point is upward above neutral axis, so it will be in compression. So you can write down this way. You can write down C. C stands for compressive stress, and you can write down here T. T for tensile stress. Okay. Yes, sir. Done.
Are you understanding now? Or else if you want you can write down the this one. You can write down ये positive है तो इसको plus sign लिखने की जरूरत नहीं है. You can simply write down this as minus 34.64. So this also it is clearly understood that की negative is tensile. Okay. So this was a quite simpler question as compared to earlier, but यहाँ पे we have understood कि how different locations you can find out the stress. Okay. Now let's go to the next question. Yeah. So now the next question is about there's a wooden beam. There's a wooden beam of 200 cross 200 mm. Okay. 200 cross 200 mm. It is simply supported on a span of 6 meter. ठीक है, एक wooden beam है 200 cross 200 मतलब क्या उसका cross section है. It is simply supported. So let me draw the beam. This is wooden beam AB. I am naming this as कितना मीटर का स्पैन है उसका 6 मीटर. Simply supported मतलब यहाँ पे एक रिएक्शन होगा और इधर एक रिएक्शन होगा. The diagram is not given to us. We are drawing it RARB. Okay. Now when the beam is loaded with a 14 kilonewton load at each 1/3 of span. What do you mean by this? So there is 14 kilonewton load at each 1/3 span. अभी ये 6 मीटर का 1/3 मतलब 2 मीटर पे होता है. मतलब 2 मीटर पे यहाँ पे एक लोड है 14 किलो न्यूटन का. वैसे ही इधर भी और एक लोड है 14 किलो न्यूटन का. ठीक है. So this is 2 meter, 2 meter and 2 meter. Understood? So now that instead of giving diagram, they will give you description and according to that you have to draw. But when this load was given, the beam failed. लिखा है कि यहाँ पे beam failed हो गया. Beam क्या हुआ? Fail हो गया. So they are asking you to find out what is the modulus of rupture. Now what is my modulus? That basically section modulus. तो या फिर modulus of rupture कैसे find करेंगे? अब इसके पहले इसका cross section क्या है पता है? तो cross section they have given. The wooden bar, अच्छा 200 cross 200 बोला है तो I'll have to draw the square. तो ये है मेरा cross section of the beam. ठीक है. उसका centroid कहाँ से जाएगा फिर? ऐसे. This is 200, so the y is 100. Okay. Now once you know the cross section, now what find the modulus of rupture मतलब क्या है? हमें पूछा है कि find out what you say this one, the bending stress, maximum bending stress. How will you calculate? And section modulus तो वैसे भी find करेंगे हम. So how will you find out? क्या क्या given है यहाँ पे? They have given a beam. So for that I'll have to find out the maximum bending moment. Now see here, when the beam is symmetric, the maximum bending moment कहाँ पे आएगा? When the beam is symmetric, the maximum bending moment will be at the central point. Exactly center पे आएगा. Bending moment maximum कहाँ पे आएगा? Center, मतलब जो location उसका center वहाँ पे आएगा. अगर नहीं पता चलता है तो we can draw SFD BMD. That doesn't make any difference. देखो अभी यहाँ पे ये symmetric है तो मुझे पता है कि ये भी 14 होने वाला है और ये भी 14 होने वाला है. No need to calculate also. And now once I know this to be 14, I can immediately draw the SFD BMD. Easily फटाफट draw कर सकता हूँ मैं SFD BMD. So let us draw that. How will you draw SFD? देखो सबसे पहले 0, उसके बाद 14 तक ऊपर जाएगा because ये 14 का लोड है. This is up to 14. उसके बाद next 14 ही रहेगा लेकिन 14 से वापस से 0 आ जाएगा. Then वापस 0 हो गया. Then we have still 0. Then have negative 14. Then we have positive 14 and then 0 ऐसा. तो ये simple ऐसा मेरा SFD बनने वाला है. ये ऐसा SFD है मेरा. ये सब values 14 है. -14 and 0 again. This is my point B. This is my point A, and let us call this as C and D. So this is C and D. Now I know that कि यहाँ पे पूरे C और D के बीच में सब जगह पे क्या है? Shear force 0 है. तो मतलब मेरा bending moment जो आने वाला है ये C और D के बीच में ही maximum आने वाला है. But I don't know, so let us calculate the bending moment. तो bending moment कितना values आएगा? C here. At A bending moment is 0. At B is 0. So I am drawing that. Now let us calculate at C. At C अगर मैंने section लिया तो उसके left में 14 into 2 28. तो C पे एक value आएगा 28 का. Similarly इधर भी उतना ही value आएगा. Because if you do at point D, it is 14 into 4 minus 14 into 2.
14 into 4 minus 2 is nothing but 14 common लेके 4 minus 2 2. That is 28 only. So you will get the BMD like this. So you can see the maximum bending moment is there between C and D. How much is M maximum? The bending moment is 28 kilo Newton meter. So you will write down 28 into 10 raised to 6 Newton millimeter. So you know the maximum bending moment now. Now you know this cross section, which is 200 cross 200. So if you know the cross section, what immediate step you can use is find out this inertia. Inertia about neutral axis or x-axis axis. You may write down inertia about neutral axis also. कितना होगा वो inertia? 1/12 200 into 200 cube. How much will be this? Can you give me the answer? Yes. 13.33. कितना? 13.33. 13.33. That's it. Into 10 raised to 7. Into 10 raised to 7 mm raised to 4. Okay. What is your y maximum? वो तो 100 है. Directly दिख भी रहा है एग्जाम में लिख के रखा है, right? So now can you calculate sigma? What is sigma? And let us first find out the section modulus. What is section modulus? Neutral axis का inertia upon y maximum. So if you solve this, you will get this as 13.33 into 10 raised to 5 millimeter raised to cube. Cube हो जाएगा because m से 1 mm से divide किया मैंने. Now we have calculated the section modulus also. Now let us calculate the maximum bending stress. Now what is maximum bending stress? So I will write down sigma maximum is equal to, I know that it will be plus and minus m by I into y. I about neutral axis and y is maximum. This bending moment also we want it is maximum. So see here plus minus का meaning तुम्हें पता है कि दोनों values आने वाले. So maximum value है मेरा m का है 28 into 10 raised to 6. Okay. And what is y? Y is 100. Let's do 10 raised to 2 लिखा मैंने. And this is 13.33 into 10 raised to 7. How much is this value? Yes, how much is this value? 21. कितना? 21.005. 21.005. That is 21. Okay. Now can you draw it here? So this is 21 and this is also 21 and you will get a variation like this. Right? This is sigma tensile, sigma compressive. The maximum value is 21 MPa. So your material should be capable of having sustaining this 21 MPa value of stress, so that your beam wooden beam will not rupture. Otherwise क्या होगा? सबसे पहला फ्रैक्चर आएगा उसके ऊपर. अभी वो नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है. अभी वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे बीम का मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है और टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है. अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वीक है तो कंप्रेशन में फ्रैक्चर आएगा, एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ वीक है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ में. बेसिकली वुडन जो होते हैं, वुडन मटेरियल्स, वो टेंसाइल में वीक होता है. तो देयरफॉर फ्रैक्चर उसके आउटर साइड पे आएगा. अगर तुमने वुडन स्केल लेके भी बेंड किया तो सबसे पहला फ्रैक्चर आएगा उसके आउटर एंड पे, जहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेसेस होंगे. समझ में आ रहा है तुम्हें मैं क्या बोल रहा हूँ? बिकॉज दिस वुड इज वीक इन टेंशन, that and it is more stable in compression. Okay. Yes, any doubt regarding this? Now let's quickly do the next question, fourth one. Let's quickly do it. Okay, now see here what the question is. A cast iron pipe, there is a cast iron pipe of internal diameter 450 mm and 15 mm thick. There is a pipe, hollow pipe. So, and it is supported on a span of 8 meters. So there is a long pipe. So I am calling a line diagram of it. Sorry. There is 8 meter span ka pipe hai. It is simply supported, right? It is simply supported like at these two ends. AB उसका नाम दे देता हूँ मैं. Okay. So reaction at A होगा and this is reaction at B. Okay. Find the maximum stress in the pipe when it is full of water. अभी ये जो पाइप है उसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा? उसका क्रॉस सेक्शन होगा ये.
ये है उसका क्रॉस सेक्शन। ओके, क्या डायमेंशन है उसका? आउटर डायमीटर कितना है? सॉरी, इंटरनल डायमीटर दिया है। हाउ मच इज इंटरनल 450. डायमीटर? द इंटरनल डायमीटर इज 450 mm। तो आउटर डायमीटर कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा, बिकॉज थिकनेस दोनों साइड पे पकड़ेंगे। तो लेट अस टेक ये आउटर और इंटरनल डायमीटर मुझे पता है। ओके, हाँ हाँ। अभी ये बीम पे लोडिंग क्या क्या है? कैन यू टेल मी? यूडीएल है, उसका खुद का वेट और वाटर का वेट। चलो, तुमने बोला यूडीएल है तो यूडीएल ले लिया। हाँ यूडीएल, बट ये यूडीएल का कुछ तो होता है ना, इंटेंसिटी डब्ल्यू, क्या है वो? जो आयन का दिया है स्पेसिफिक वेट, उसका ये खुद का यूडीएल, मेजर। इसका यूनिट पता है क्या होता है? आइदर इट इज न्यूटन पर मीटर या न्यूटन पर किलोमीटर। ये तो मिलीमीटर क्यूब में है। अभी क्या करेंगे? यस, एनीवन? स्पेसिफिक वेट को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको 8 मीटर से डिवाइड, वॉल्यूम से मल्टी, हाँ स्पेसिफिक वेट दिया है ना, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। जो पाइप का वॉल्यूम है वो कास्ट आयरन के स्पेसिफिक वेट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 8 से डिवाइड किया तो हमें W का वैल्यू मिलेगा कास्ट आयरन के लिए। वैसे ही सेम वाटर से मल्टीप्लाई करना है, उसका वॉल्यूम आएगा जो उसका इंटरनल है पाइप का, वो आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। हु इज दिस? कौन था ये? हर्ष गोरे। हर्ष गोरे। Yes, sir. वेरी गुड। सो बेसिकली हाउ वी विल राइट डाउन इट, अभी तूने बोला वो करेक्ट है, बट बहुत सारे लोगों को समझा नहीं गया यहाँ पे क्या है। सो लेट अस, आई एम राइटिंग इट नाउ। आई नो दैट कि ये अभी ये इंटेंसिटी W होने वाला है, बट वो W क्या है? तो मैं पहले बोलता हूँ कि ये जो इंटेंसिटी स्मॉल W होता है ना, वो होता है मेरा इज नथिंग बट टोटल लोड अपॉन लेंथ। ये होता है बराबर। ये इंटेंसिटी मुझे चाहिए ना W, तो वो क्या होता है? टोटल लोड अपॉन लेंथ, बराबर। अब ये टोटल लोड किसका है? तो टोटल लोड दो चीज का है, एक तो वेट ऑफ कास्ट आयरन प्लस वेट ऑफ वाटर, बराबर कि नहीं, अपॉन द लेंथ। इज इट करेक्ट? यस, करेक्ट है। ओके, सो नाउ व्हाट इज वेट ऑफ कास्ट आयरन? वेट इज नथिंग बट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। नाउ दिस डेंसिटी इज वेट डेंसिटी, तो डायरेक्टली मैं वेट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ, प्लस डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ कास्ट आयरन एंड डेंसिटी ऑफ कास्ट आयरन, डेंसिटी ऑफ वाटर into density, volume of water, volume of water. Okay, so upon the length. Now can you tell me what is the density of cast iron they have given? They have given it is 71,600 Newton per meter cube है, तो into volume multiply करना पड़ेगा। What is the volume of pipe? Area into length, बराबर कि नहीं? What is the area? Area is pi by 4 into 480 square into how much? Sorry, 480 square minus 450 square. 450 square, right? जाता क्यों नहीं है? हाँ, ओके, गॉट इट। ये हो गया किसका? कास्ट आयरन का। माइनस क्या करना पड़ेगा? माइनस में वाटर का। वाटर का क्या है? 9810 pi by 4 into 450 square. 9810 into कितना है वो? pi by 4 450 square. pi by 4 into 450 into square. 450 Now square. see here, मैंने खाली एरियाज लिखा है, लेंथ लिखा ही नहीं। क्यों मालूम है? बिकॉज इनटू लेंथ इधर भी आएगा, लेंथ इधर भी आएगा, और वो लेंथ नीचे भी है, वो सब लेंथ वो 80 मीटर है सबका। तो पूरा पाइप को मैंने लेंथ से कैंसिल कर दिया, तो खाली लेंथ को हटा दो एंड कैलकुलेट एंड गिव मी द वैल्यू ऑफ दिस W. द यूनिट विल बी इन न्यूटन पर मीटर। चल, ये पूरा बड़ा सा कैलकुलेशन करो एंड गिव मी द आंसर। बट ये क्यों किया, ये नहीं समझा।
अरे लोड ही नहीं दिया है ना हमको, अभी बिना लोड के मैं कैसे बेंडिंग मोमेंट फाइंड करूं? बीम दिया है, उसके ऊपर लोडिंग कंडीशन के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। दे हैव गिवन अस द कंडीशन कि भाई एक तुम्हारा वाटर पाइप है, वाटर पाइप में वेट किसका होता है? तो खुद का वेट रहता है जो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड पानी जो अंदर रहेगा फुल्ली फिल्ड, उसका वाटर वेट रहेगा। तो वही वेट लिया मैंने, और मैं उसको यूडीएल अज्यूम करके उसका डब्ल्यू फाइंड कर रहा हूँ, इंटेंसिटी। एंड बाय यूजिंग दैट डब्ल्यू देन लेटर ऑन आई विल कैलकुलेट माय मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ऑफ कोर्स वो तो सेंटर पे आएगा बिकॉज ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, एंड वो बेंडिंग मोमेंट लेके बाद में मैं फाइंड करूंगा कि कितना बेंडिंग स्ट्रेस आता है। ओके यस सर वाटर का माइनस क्यों किया उसमें से? ओ सॉरी, माइनस किया था मैंने, सॉरी सर सॉरी, प्लस रहेगा वो। इट हैज टू बी प्लस। वेरी गुड, प्लस ही होना चाहिए, वाटर माइनस नहीं करेंगे। या कितना आता है? फोर पॉइंट इंटू 10⁻13 आएगा क्या? कितना आया? 4.37 इंटू 10⁻13 आएगा। Yes sir, 4.377 into 10 raised to 13. 4.37 7 into 10 raised to 13. into 10⁻13 Yes sir. न्यूटन पर मीटर, बराबर ना? Yes नाउ sir. सी हियर, अभी देखो मुझे अभी ये W का वैल्यू मिल गया, ये W का वैल्यू आई नो नाउ, इट इज 4.37 into 10⁻13 न्यूटन पर मीटर। ओके, नाउ आई वांट टू फाइंड आउट कि अगर ये W है, यहाँ पे यूडीएल है, अगर ये लेंथ L है, ये पूरा इसका, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे आएगा, ये तो सबको पता है। अभी वो ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ मैं एसएफडी बीएमडी, यू नो दैट कि एसएफडी बीएमडी हमने सिंपली सपोर्टेड के लिए ऑलरेडी ड्रॉ किया है। तो व्हेनेवर वी हैव अ सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएल, द बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम एट द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द बीम, एंड वो कितना होगा उसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है हमारे पास, बट वो फॉर्मूला कैसे आता है वो बता रहा हूँ, एंड हियर ऑनवर्ड्स वी विल डायरेक्टली यूज दैट फॉर्मूला। अभी वो कैसे आएगा? तो देखो सी सेक्शन पे, अगर मैंने सी पे कोई सेक्शन लिया, ठीक है, तो उसके लेफ्ट में दो चीजें बचती है, एक तो ये आर ए बचता है, और ये आधा यूडीएल बचता है। अभी ये यूडीएल का ये यूडीएल का डब्ल्यू इज द इंटेंसिटी। अगर टोटल डब्ल्यू इंटेंसिटी है तो टोटल लोड कितना होगा? डब्ल्यू इंटू एल। तो मेरा ये रिएक्शन हो जो होगा ना, वो होगा डब्ल्यू इंटू एल बाई टू। सबको समझा ये डब्ल्यू इंटू एल बाई टू कैसे आया? देखो मेरा पूरा यूडीएल का इक्विवेलेंट कितना होगा? डब्ल्यू इंटू लेंथ, इंटेंसिटी इंटू लेंथ, बराबर। एंड वो आधा आधा डिवाइड होगा ना दोनों एंड्स पे, आर ए पे आधा, आर बी पे आधा, बराबर। तो इसके लिए मैंने लिखा है वो डब्ल्यू एल बाई टू, वो वैल्यू रिएक्शन सॉल्व करके आया है मेरे को। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, उसके लेफ्ट साइड पे अगर देख के मुझे बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है, तो मुझे इतना ही जो सेक्शन है, अभी ये कितना पार्ट बचा? एल बाई टू लेंथ का पार्ट बचा, एल बाई टू लेंथ है, बिकॉज सी पे वो डिवाइड हो गया ना आधा बीम। तो अभी इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा? इतना जो यूडीएल बचा है उसका इक्विवेलेंट आएगा डब्ल्यू इंटू एल बाई टू, and it will act at what distance? It will act at a distance of L by 4. Are you understanding this? This is the same thing we are doing which we have done in SFD BMD. How to calculate BMD at that point P, जब हम लोग कोई बीच का ही पॉइंट लेके फाइंड करते थे। So that is the way we were doing it. So अभी ये पॉइंट C पे मुझे फाइंड करना है वैसे ही सेम। तो उसके लिए मैं अगर बेंडिंग मोमेंट C पे फाइंड करता हूँ तो कितना आता है? तो मेरा बेंडिंग मोमेंट आता है आर ए का वैल्यू है डब्ल्यू एल बाई टू इंटू उसका डिस्टेंस है एल बाई टू, माइनस ये जो इक्विवेलेंट है ये वाला, उसका इक्विवेलेंट का वैल्यू है डब्ल्यू एल बाई टू, और उसका डिस्टेंस है एल बाई फोर। तो देखो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई फोर माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट, एंड इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट। सो दिस इज योर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. So here onwards we will be using this as our formula. Whenever we have a simply supported beam with UDL having intensity W and span L, the maximum bending moment the beam will be subjected to is how much? Sorry, the maximum bending moment. So the maximum bending moment for simply supported beam with UDL
with UDL कितना होता है WL square by 8. Now can you calculate what is the value for our case? कितना वैल्यू आएगा हमारे केस के लिए? W का वैल्यू कितना है 4.37 into 10 raised to 13. What is the length? 8 meter span. उसका square upon 8. How much will be this? कितना आएगा बताओ जरा? 3.5 into 10 raised to 14. कितना? 3.5 into 10 raised to 14. 3.5 into 10 raised to 14. But that is in Newton meter ना? है ना? Yes, हमें sir. उसको मिलीमीटर में चाहिए तो 3.5 into 10 raised to 17. 10 raised to 17. 17 बराबर. So we'll have to write down 10 raised to 17 Newton millimeter. So now you know the M. Formula क्या है हमारा? Sigma equal to M by I into I. अभी M I और I हमें find करना पड़ेगा, वो तो तुम्हें पता है. So I'm writing it here now. So how will you find out I for this section? It is pi by 64. 480 raised to 4 minus 450 raised to 4. How much will be this answer? And what is your y? Y होगा 480 by 2. That is 240. ये कितना होगा? $59.28 10 raised to 7. 69.59. 59. 59.28. 28 into 10 raised to 7. 7. Okay, so 59.28 into 10 raised to 7. अब ये सॉल्व करो पूरा, कितना आएगा सिग्मा का वैल्यू? ऑफ कोर्स इट विल बी प्लस माइनस. into 1.416 into 10 raised to 11. ठीक है, कुछ समझा क्या कैसे किया हमने? प्रोसीजर सेम है बट कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम का डिपेंड करता है कि हाउ द डेटा इज गिवन एंड हाउ यू एक्सट्रैक्ट इट. नाउ हियर दे हैव गिवन समथिंग अबाउट योर स्पेसिफिक वेट, तो उसको हमने यूज करके W फाइंड किया. एंड अभी इधर से आगे जब UDL और सिंपली सपोर्टेड आएगा तो आई कैन डायरेक्टली राइट डाउन दिस फॉर्मूला WL स्क्वायर बाय 8 जो लिख के रखा है ना मैंने. मतलब इन एग्जाम आल्सो यू कैन राइट डाउन व्हेन द प्रॉब्लम इज अबाउट UDL विद सिंपली सपोर्टेड बीम, you can directly write कि maximum bending moment उधर ही आता है, WL square by 8 उसका वैल्यू होता है, because it's a standard one and no need to solve it again and again. So directly WL square by 8 लेने का. So there are some standard formulas which you will be remembering for that. For example, if you have a cantilever beam with fixed cantilever beam with UDL and fixed at one end, and if it is a simply supported beam, if it is a simply supported with central load, ठीक है, तो उसका वैल्यूज है अलग अलग. वो वैल्यूज तुम तो याद रखो या फिर यू सॉल्व इट, इट इज योर चॉइस. नोबडी इज कंपेलिंग यू कि तुम फॉर्मूला याद रख के सॉल्व करो. यस, हु इज दिस? ओके ओके फाइन. इज देयर एनी डाउट अबाउट दिस? एनीवन? दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन वी सॉल्व. Okay, so in further class we will do the next important part of the chapter, where instead of having one material, single material, we'll involve two multiple materials to in the same